Yes, we ready? Start. Mr. Sareen referred to the provisions of Section 12 of the Haryana General Sale Tax Act. Stop. It inter alia provides that a tax on the sale or purchase of goods shall not be imposed under this act. Stop. Where such sale or purchase takes place in the course of import of the goods shall not be imposed under this act. Stop. Where such sale or purchase takes place in the course of import of the goods into or export of the goods out of the territory of India. Stop. Thus, in a case where a sale or purchase takes place in the course of export of goods, the tax shall not be leviable under the State Act. Stop. However, the question as to when can be sale or purchase be said to take place in the course of export has to be decided with reference to section 5 of the Central Act. Stop. Thus, when section 12 and 15 are read together, it is clear that no tax is payable under the State Act on the purchase and sale by the exporter. Stop. The statute does not regard the purchase of paddy by the miller from the commission agent as a part of sale or purchase in the course of export. Stop. Mr. Sareen also referred to the provisions of Section 271 aid of the State Act to contend that transactions falling under Section 12 are excluded from the taxable turnover of the dealer. Stop. It is undoubtedly so. Stop. However, as noticed above, the transactions involved in the present case are not covered by Section 12. Mr. Sareen submitted that paddy and rice are goods of special importance. Stop. A special provision obliterating the distinction having been made, the fiction must be given full effect. Stop. He referred to the decisions in East and Dwelling Company Limited versus Finsbury Borough Council to State of Andhra Pradesh versus Valhampuram Ravi 3. The Commissioner of Income Tax Patiala versus Shri Sarup Krishan 4 and in M. Gannon drunkenly and company and other verses State of Rajasthan and others 5. Stop. Under Section 17 of the Haryana Act, the tax on declared goods is leviable at the stage indicated in Schedule D. Stop. On the perusal of the schedule, it is clear that the taxable event when the commodity is imported into the state is at the stage of first sale within the state by a dealer liable to pay tax
under this act. Stop. When the goods are purchased within the state, the stage of levy is last purchased within the state by a dealer liable to pay tax. Stop. This provision would have been relevant if the fiction introduced by section 15 was not limited to the transaction covered by clause 3 of section 5. Stop. The parliament itself having limited the scope of fiction, the court cannot extend the benefit to a transaction which is not covered by the provisions. Stop. That shall do violence to the plain language of the provision. Stop. Hi student, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।